Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Abrol. Welcome back to my YouTube channel. Thought for the day is, when everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. Now today's lecture is from chapter 6, class 12, that is General Principles and Processes of Isolation of Elements. So, जैसे कि आपको इसके नाम से पता लग रहा है कि हम इसमें कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, कुछ प्रोसेसेस की बात करेंगे, जिनमें हम आइसोलेशंस करेंगे एलिमेंट्स की. आइसोलेशन मींस टू सेपरेट आउट. सबसे पहला टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का एलिमेंट्स. एलिमेंट्स अक्कर इन नेचर इन द फ्री एज वेल एज अ कंबाइंड स्टेट. कुछ एलिमेंट ऐसे हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और कुछ ऐसे हैं जो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं विद कॉम्बिनेशन ऑफ सम अदर एलिमेंट्स. सेकेंड टॉपिक इज मिनरल्स एंड ओर्स. The natural substances in which metals occur either in native state or in combined state are called as minerals. The minerals from which the metal can be conveniently and economically extracted is called as an ore. For example, aluminium occurs in the earth crust in the form of minerals such as bauxite and clay. Out of these two minerals, aluminium can be conveniently and economically extracted from bauxite and not from the clay. Therefore, bauxite is an ore of aluminium. Third topic is metallurgy. The process of extraction of metals from ore is called as metallurgy. The ores generally contain non-metallic impurities called as metric and gangue. The common steps involved in the extraction of metals are given as below. There are mainly 6 steps which we use to form the metal from an ore. By using these steps, the first step is crushing and grinding of the ore. Second will be your concentration or beneficial of ore or dressing of the ore. Third one is calcination. Fourth is roasting. Fifth one is extraction of metals and the sixth one is refining of metals. हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप से, that is crushing and grinding of the ore. As the name indicates, crushing and grinding of the ore means crushing of the ore or breakdown of ore into smaller pieces with the help of crushers. After the crushing of ore, we use that crushed material and we done the second step. In this step, we will dress the ore. In this process, the removal of impurities from ore is known as a concentration or beneficiation of ore or a dressing of ore. It can be carried out in the following ways depending upon the nature of the ore. तो ore में से हमने impurities separate out करनी है, उसके different processes हैं जो हम अब one by one cover करेंगे. The first is gravity separation. Second one is magnetic separation. Third is FROTH flotation process. Fourth is liquefaction. Fifth one is leaching. हम फर्स्ट स्टेप करेंगे पहले, जिसमें हम करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन. एज द नेम इंडिकेट्स, द टर्म इज यूजफुल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी एंड वी सेपरेट और प्योरीफाई द ओर बाय यूजिंग द टर्म ग्रेविटी. सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड द पाउडर्ड ओर इज फेड इनटू अ स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर व्हेन द लाइटर इंप्योरिटीज आर वॉश्ड अवे एंड द हेवियर ओर पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड. जब हम ओर के पार्टिकल्स को यहाँ पे पाउडर फॉर्म में जो हमने क्रश किया था स्टेप 1 में, यहाँ पे वाटर स्ट्रीम के ऊपर डालते हैं, तो वाटर के फ्लो के साथ साथ जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो यहाँ बैठ जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल होते हैं वाटर के साथ फ्लो कर जाते हैं, और जितनी जितनी हल्की इंप्योरिटीज होंगी, लाइटर और होंगी, वैसे वो यहाँ से सेपरेट होती जाएंगी. एंड दिस इज नोन एज द ग्रेविटी सेपरेशन. एंड बाय दिस मेथड जनरली oxides and carbonate ores are concentrated by this method. The second one is magnetic separation. As the name indicates, here we use the term magnet.
दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन आइदर द ओर और द इम्प्योरिटीज आर मैग्नेटिक, या तो हमारी ओर मैग्नेटिक हो या फिर उसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वो मैग्नेटिक हो। उस टाइम पे हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन यूज करते हैं। इस तरह का सेटअप होता है, हमारे पास ये बेल्ट होती है, इसके ऊपर हम जो फाइनली ग्राउंड ओर है उसको डालते हैं और यहाँ पे जब वो मूव करती है बेल्ट मैग्नेटिक रोलर, तो जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो रोलर के साथ आ जाता है और यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और जो नॉन मैग्नेटिक है वो दूसरे चैम्बर में कलेक्ट हो जाता है, जिसके कारण हम मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। एंड दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ हेमेटाइट ओर ऑफ आयरन और ओर ऑफ क्रोमियम क्रोमाइट। Third process is froth flotation process. This process is based upon the different wetting properties of ore and gangue particles with water and oil. इस मेथड में हम क्या करते हैं, ओर के पार्टिकल्स को वेट करते हैं with water or oil. It is commonly used for the sulfide ores. In this method, powdered ore is mixed with water containing small quantity of oil and then agitating the water by blowing air violently. When a froth or a foam is formed, this froth carries the lighter ore particles to the surface and heavier impurities sink to the bottom. Like यहाँ पे हम करते क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने वाटर ऐड किया, बीच में थोड़ा ऑयल है और उसमें हमने अपनी जो ओर है, जो ग्राउंडेड पार्टिकल्स हैं ओर के, वो डाल दिए। और जब हम इसको रोटेट करते हैं हाई स्पीड पे तो क्या होता है, यहाँ पे एक फोम बनती है जिसको आप झाग बोलते हो। दैट फोम, उस फॉर्म में लाइटर पार्टिकल जो थे वो चले जाते हैं और जो हैवियर पार्टिकल थे वो नीचे रह जाते हैं। तो हैवियर इम्प्योरिटीज थी वो सेटल हो जाएंगी, और अगर हमारी जो ओर है वो लाइट थी तो वो लाइट ओर जो है वो सरफेस के ऊपर आ जाएगी। द नेक्स्ट फोर्थ वन इज लिक्वेशन. दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेटिंग ओर्स हैविंग लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स देन द इम्प्योरिटीज. जब हमारी ओर्स का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इम्प्योरिटी से, तो हम हीट करते हैं ओर्स को ऑन अ फ्लोर ऑफ फर्नेस, और हम टेम्परेचर जब राइज करते हैं तो जो ओर है वो मेल्ट हो जाती है और वो फ्लो करती है, और जो फ्लो मटेरियल था हमारा, जो ओर थी उसकी जो इम्प्योरिटीज थी वो फ्लो नहीं करती है, तो इम्प्योरिटीज वहीं रह जाती है और हम इस तरह से इम्प्योरिटीज को सेपरेट कर लेते हैं अपनी ओर से। लास्ट मेथड इज लीचिंग. दिस इज अ केमिकल मेथड इन विच पाउडर्ड ओर इज ट्रीटेड विद certain reagents in which the ore is soluble but the impurities are not soluble. तो impurities dissolve नहीं होंगी, the impurities left undissolved are removed by filtration, और filtration से हम उनको remove कर लेंगे. This method is used for the ores of aluminium, gold, silver, etc. तो ये था हमारा सेकंड मेथड. फर्स्ट हमने क्रशिंग किया, सेकंड हमने ड्रेसिंग किया, थर्ड इज योर कैल्सिनेशन. It is the process of heating the ore strongly either in a limited supply of air or in the absence of air. Calcination से याद रखना, यहाँ पे हम absence of air की बात करते हैं, means absence of oxygen. During this process, moisture and other volatile impurities are removed. तो जितना भी moisture और other volatile impurities होंगी वो सारी remove हो जाएंगी, एंड जो सॉल्ट होंगे वो डिकम्पोज हो जाएंगे, और जो हमारी ओर है वो पोरस बन जाएगी, उसमें पोर्स आ जाएंगे क्योंकि जो इम्प्योरिटीज थी वो रिमूव हो जाएंगी, लाइक मॉइस्चर एंड अदर वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज. द फोर्थ वन इज योर रोस्टिंग. इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर. इट इज मेनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स. ड्यूरिंग रोस्टिंग द मॉइस्चर एंड अदर वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड and ore is converted to oxide. क्योंकि रोस्टिंग हम in the presence of air कर रहे हैं, means in the presence of oxygen, इसके कारण यहाँ पे हमारी जो ओर है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ऑक्साइड बनाती है, और यही हमारे पास डिफरेंस है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का. तो बाय दिस आपको ये क्वेश्चन लिखना है, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. तो रोस्टिंग में हम लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, कैल्सिनेशन में लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और एयर. It is suitable for sulfide ores. This is suitable for carbonate ores. यहाँ पे हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है मेटल ऑक्साइड के साथ में, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज यहाँ पे सल्फाइड ओर्स थी और यहाँ पे कार्बोनेट ओर्स थी. यहाँ पे हमने एग्जांपल दे दी ZnS, Cu2s, और ये इसकी इक्वेशन, और यहाँ पे हमारे पास कार्बोनेट की एग्जांपल है. सो बाय दिस आई फिनिश माय दिस लेक्चर हियर. इन नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट 2 पार्ट्स डिस्कस करेंगे.
जो 6 methods involve हैं for purification or the parts of metallurgy. Till then, revise this, share if you find it useful. Keep watching, share and subscribe my channel. See you in the next lecture. Till then, keep learning. Bye bye.